Dosto, good evening all. Let's begin with today's session. So look at the first question. The first question is from the UPSC 2025 Prelims, right? Which deals with the ordinance making power of the president and the state governor. So consider the following statements. The first statement says an ordinance can amend any central act. Absolutely correct. Second statement says an ordinance can abridge a fundamental right. No, that's not correct. An ordinance cannot abridge fundamental rights. Clear? The third statement says an ordinance can come into effect from a back date, means from the retrospective effect. तो क्या ordinance को back date से जो है वो लागू किया जा सकता है? The statement is absolutely correct. Okay, so both 1 and 3 are correct. Question is, which of these statements given above is obligor? Correct. So correct answer would be 1 and 3. So C for Calcutta would be the correct answer. Now let us understand. We adopted this concept. We adopted the ordinance making power from the Government of India Act 1935. Clear? So the Government of India Act 1935 provided this exceptional instrument. Generally, it is a non-democratic instrument. Why? Because it bypasses the debate, discussion and deliberation. तो पार्लियामेंट का जो बेसिक एसेंस है, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, इसको बाईपास करने का काम करता है ऑर्डिनेंस. अब ऑर्डिनेंस बेसिकली एक एक्सेप्शनल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल आप रेयरली कर सकते हैं. जब बहुत कंपेलिंग रीजंस हो, बहुत कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मींस प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर को. लेकिन क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो. Right? So do understand. So Article 123, it deals with the ordinance making power of the President of India, and Article 213 deals with the ordinance making power of the state governor, right? अब ordinance का maximum जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है? देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 सेशंस के बीच में, okay, there shall not be a gap of more than 6 months between 2 consecutive sessions. इसका मतलब साल में मैंडेटरी नंबर ऑफ सेशंस कितने हुए? 2 सेशंस हुए, राइट? तो सेशन 1 एंड सेशन 2 के बीच में कितना गैप हो सकता है? मैक्स 6 मंथ्स का. तो एक तो हो गया 6 मंथ्स, प्लस उसके बाद जैसे ही नया सेशन रीस्टैब्लिश होता है, रीऑर्गेनाइज होता है, विद इन 6 वीक्स के अंदर अंदर, so within 6 weeks ordinance shall be passed by both the houses of parliament. इसका मतलब टोटल इसका लाइफ टाइम कितना हुआ? 6 months and 6 weeks. Is that understood? So do remember. Now let's move on to the explanation part. Explanation में basically हम बात करेंगे दो important judgments की यहाँ पे. The first one is Dr. D.C. Wadhwa case. Okay. So in Dr. D.C. Wadhwa judgment, the Supreme Court held that an ordinance promulgated by the governor to meet an emergent situation shall cease to be in operation at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature. तो reassembly कब हो सकती है? Max time क्या हो सकता है? 6 months का. तो correct answer क्या हो गया यहाँ पे? Shelf life का 6 months and 6 weeks, right? The court also said that if the government wishes for the ordinance to continue in force beyond the 6 weeks period, then it has to go before the legislature, right? And in 2017, Supreme Court examined Krishna Kumar Singh and another versus State of Bihar case and reiterated that the governor's power to issue an ordinance is in nature of an emergency power. तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हुआ ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस एक एक्सेप्शनल इंस्ट्रूमेंट है जिसका जिसका जो यूज है वो कंपेलिंग सिचुएशंस में करना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में करना चाहिए, सिनेरियो में करना चाहिए, ना कि इन जनरल. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. Now let's move on to the next question. So look at the next question, question number 2. Consider the following statements. Again, it's a previous year question, UPSC 2025. Statement number 1 says, some rare earth elements are used in the manufacture of the flat television screens, computer and the computer monitors. Absolutely correct. The second statement is, some rare earth elements have the phosphorescent properties. See, this is also true. Some of the rare earth elements like iridium have the phosphorescent properties. अब क्योंकि phosphorescent properties हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किस में हो रहा है? Some of the rare earth elements are used to manufacture the flat television panels and the computer monitors. Why? Because they possess this quality. Is that understood? तो क्या सब यहां पे लिखा है? क्या यहां पे all लिखा हुआ है? नहीं, यहां पे लिखा हुआ है some rare earth elements have the phosphorescent properties, and that is why they are used to manufacture the flat television
and the computer monitors. Absolutely correct. तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसको यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट उसके रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है. इसका मतलब both the statements are correct and the second statement is providing the reason or the justification for the first statement, right? So both 1 and 2 are correct and the statement 2 explains the statement number 1. So A for Ahmedabad would be the correct answer, right? Question pucha hua tha, which one of the following is correct in respect of the above statement? So both these statements are correct and the second statement that justify the statement number 1. Right, now let's move on to the next question. तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, like Erythrium is there. Okay, so Yttrium is there, then Europium is there, Terbium is there. तो इनका इस्तेमाल किस में होता है? टीवी स्क्रीन्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स में होता है, राइट? और इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? इनमें होती है बेसिकली फॉस्फोरेसेंट एंड ल्यूमिनेसेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the question number 3. The Papua New Guinea shares its only land border with which of the following countries? The correct answer is Indonesia, right? So where is Indonesia? Indonesia is situated in the Southeast Asia, right? And it is a member of ASEAN, the Association of Southeast Asia Nations. Now the question is कि हमने इसको क्यों पिक किया इस MCQ को? Now look at the explanation part. First of all, look at the map. So this is Papua New Guinea with the capital Port Moresby, and it forms its only land border with the Papua Indonesia. So Papua Indonesia किसका part है? Indonesia का. Understood. And do remember that Papua New Guinea is the part of the Melanesia, right? So why we picked up this question? Because a strong earthquake occurred in this region. Clear? Now let's move on to the next question. So look at the next question, question number 4. Consider the following statements regarding the draft IT Digital Code Rules 2026. The first statement says, the draft IT Digital Code Rules 2026 have been proposed under Section 87(1) of the IT Act of 2000. Absolutely correct. See all the rules like IT rules 2021 या फिर IT rules 2021 के पहले हमारे पास क्या था? IT rules 2011. तो ये सभी रूल्स बेसिकली किसके बेसिस पे या कहां से स्टेम आउट हो रहे हैं? ये स्टेम आउट हो रहे हैं फ्रॉम द सेक्शन 87(1) ऑफ द आईटी एक्ट 2000, राइट? सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द ड्राफ्ट इंट्रोड्यूसेस a mandatory age-based classification system for all the digital content similar to the film certification. So this is equally correct. Which of these statements given above is oblique correct? So both these statements are correct here. C for Calcutta would be the correct answer here, right? Now look at the explanation part. This statement number 1 is correct. The draft rules are proposed under section 87(1) of the IT Act 2000. Read with section 67, 67A and 67B of the IT Act. The proposal follows a Supreme Court direction asking the government to strike a balance between the freedom of speech under Article 19(1)A and the reasonable restrictions under Article 19 Clause 2, especially in the matters of morality, public order, and decency. So you can see this article, age restrictions or age rating to list of don'ts एंड ड्राफ्ट रूल्स ऑन दी ऑब्सेनिटी ऑनलाइन. तो जो ऑनलाइन ऑब्सेनिटी आप देख रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और ये कोशिश करना कि वो एटलीस्ट एक सर्टेन एज ग्रुप तक के ना पहुंचे, इसलिए रूल्स लाए गए हैं. अब यहां पे देखिएगा ध्यान से. द ड्राफ्ट मैंडेट्स कंपल्सरी एज बेस्ड क्लासिफिकेशन लाइक यूनिवर्सल, देन 7+, 13+, 16+ एंड एडल्ट फॉर ऑल द डिजिटल कंटेंट सिमिलर टू द फिल्म सर्टिफिकेशन. अंडरस्टूड? सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. So before we proceed, look at this area as well. So subjects like information technology या फिर cyber security, जितने भी evolving subjects हैं, ये सभी evolving subjects जो हैं ये किसके jurisdiction में आते हैं? ये basically आते हैं Parliament of India के jurisdiction में. मतलब 7 schedule में जो हमारे पास 3 list हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ये इन तीनों का हिस्सा नहीं है. ये कहाँ पे हैं? ये बेसिकली जाएंगे रेसिडरी लिस्ट में, रेसिडरी पावर्स में. और रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का राइट किसके पास है? अथॉरिटी किसके पास में? ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इज दैट अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पिग्मी हॉग. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज द स्मॉलेस्ट and the rarest species of the wild pig in the world. Absolutely correct. Second statement says it is an indicator species for the health of the grassland ecosystem. Means if the pygmy hogs are present, that means that the grasslands are in the healthy condition, right? So it is an indicator species.
Clear? So second statement is also correct. The third statement says its conservation status is critically endangered under the IUCN Red List. Again, correct. The fourth statement says at present it is found in the grasslands of the Western Ghats. No, that's not correct. It is found only in the state of Assam. Clear? Nowhere else. So याद रखिएगा. Which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be 1, 2, and 3. Means A for Ahmedabad would be the correct answer here. Right? Now, why we picked up this question? There's a strong reason. Recently, an article was published in the Hindu and like in the Down to Earth. So we picked up this article from Down to Earth, right? With the title, A Little Pig Goes a Long Way. So India's pygmy hog is vanishing from its grasslands just as it is needed the most. Clear? So it is the smallest and the rarest wild pig in the world, endemic to India and critically endangered है status इसका IUCN में. Plus also remember that it is found only in the state of Assam. Clear? And Assam में भी कहाँ पे? Manas and Orang National Parks. Clear? Now let's move on to the next question. So question number 6. Consider the following statements. The first statement says the Indian Ocean Naval Symposium was conceived by the Indian Navy in 2008 to enhance the maritime cooperation among the littoral states of the Indian Ocean region. Absolutely correct. The second statement says the IONS includes 36 littoral states of the Indian Ocean grouped into 4 sub-regions and also allows the observer status, observer nations such as China, Japan, and Russia to participate. Again, correct. But is it the justification of the statement number 1? No. The statement number 2 is simply telling you about the membership, about the observer status, nothing else. Is that understood? So statement number one and statement number 2 both are equally correct, but statement number 2 is not the justification of the statement number 1. So correct answer क्या हो जाएगा? B for Bombay. Both the statement 1 and 2 are correct, but the statement 2 does not explain the statement number 1. So I hope you understood. Now look at the explanation part. See the explanation. So look at this one. There are 36 littorals in the Indian Ocean, right? Which have been geographically grouped into the following 4 sub-regions like South Asian littorals. Clear? And then the Southeast Asian and the Australian littorals. Clear? तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कौन-कौन से सब रीजन्स हैं. So I hope you guys understood. Clear? Observer status की बात करें तो China, Germany, Italy, Japan, Madagascar and Netherlands and Russia and Spain. Right? Now let's move on to the next question. So question number 7. Consider the following statements about the Lambadi community in India. These are Banjaras, right? So इनका जो origin है, somewhere it is connected with the state of Rajasthan. बंजारास जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? स्टेट ऑफ राजस्थान से, राइट? लेकिन ये प्ले इनका ओरिजिन है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और प्रेजेंट नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज द लंबाडी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट इज दे आर आल्सो नोन एज द बंजारास. करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज द लंबाडी लैंग्वेज द गोर बोली हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. इनका जो स्क्रिप्ट है इट इज समवेयर इंडो आर्यन. क्लियर? तो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं लाइक तेलुगु, कन्नड़, इसको ये स्क्रिप्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. खुद का स्क्रिप्ट नहीं है, तो ओरल लैंग्वेज है, खुद का कोई स्क्रिप्ट नहीं है ओरिजिनल. क्लियर? अब सवाल है कि इस क्वेश्चन को हमने पिक क्यों किया है. देखिए, स्टेट ऑफ तेलंगाना में देयर इज अ डिस्प्यूट. व्हाई? देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द एसटी स्टेटस ऑफ दिस ट्राइब. अब देखिए यहां पे ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहां बेसिकली है लाइक जो मैटर है वो है रिजर्वेशन का. अब सबको रिजर्वेशन में क्या चाहिए? शेयर चाहिए. एक ऐसा केक है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता. राइट? अंडरस्टूड. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रिजर्वेशन के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, जो सिंपली चाहते हैं कि लाइक वो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन लें. अंडरस्टूड. तो आपने कई बार देखा होगा आपके बहुत सारे दोस्तों को भी जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डिस्पाइट दिस दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ रिजर्वेशन. दे डू नॉट विश टू एंजॉय. क्लियर? अब यहां देखिएगा ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेसिकली अगर लंबाडी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन मिल जाता है तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएगी? रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगी. अब यहां जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो अदर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ तेलंगाना दे डू नॉट वांट लंबाडी कम्युनिटी टू एंजॉय द ट्राइबल स्टेटस.
तो बेसिकली लड़ाई किसकी है? रिजर्वेशन की लड़ाई है। तो यहाँ पे अदर ट्राइबल ग्रुप्स नहीं चाहते हैं कि लंबाडी कम्युनिटी जो है उसको एसटी स्टेटस मिले और इनको यहाँ पे रिजर्वेशन के फ्रूट्स एंजॉय करने मिले। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि मैटर क्या है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर, between the tribal communities and the Lombardy group. Now, let's move on to the explanation part. Can the decade old constitutional dispute over the Lombardas scheduled tribe status in Telangana can be resolved? Supreme Court is once again being asked to rule on whether Parliament's decision on scheduled tribe status can be reopened decades later. Clear? So Supreme Court is once again being asked to rule on the long-standing controversy of Parliament's decision to schedule tribe status on the scheduled tribe status to the Lombardy community in Telangana. So Lombardy is a scheduled tribe candidate for Telangana with distinct linguistic and cultural traits, but an oral language tradition. तो इनका अपना कोई language नहीं है, do remember. And we picked up this article from Down to Earth. Now let's move on to the next question. So question number 8, the fourth industrial revolution network. It was launched by the World Economic Forum. See, World Economic Forum was set up in 1971 by Carl Schwab. Clear? And the World Economic Forum publishes various reports. For example, the Global Risk Report, the Global Gender Gap Report, then the Global Competitiveness Report. So do remember all these reports, right? UPSC generally reports के ऊपर questions पूछता है. So you need to be aware of these reports. Now look at the explanation part. The WEF to launch the 5 new centers for the fourth industrial revolution, one in India. And where in India? In Andhra Pradesh, right? So the World Economic Forum will establish the 5 new centers for the fourth industrial revolution, including one in India's Andhra Pradesh. Chaliye. So look at the next question. Consider the following statements about the Mosi River. The first statement says the Mosi River originates from the Anantagiri Hills in the state of Telangana and it is a tributary of the Krishna River. Absolutely correct. It is indeed a tributary of Krishna River. अब यहाँ देखिए फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, यहाँ देखिए या तो फर्स्ट करेक्ट हो सकता है तो फोर्थ करेक्ट हो सकता है, क्योंकि फोर्थ क्या कह रहा है? द मोसी रिवर अल्टीमेटली जॉइंस द गोदावरी रिवर नियर द नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट. नो, इट्स नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट हो गया वो क्या है? दैट इज रूल्ड आउट. अब देखते हैं कि क्या एलिमिनेशन मेथड काम कर रही है. So which of these statements given above is oblique are correct? So is the elimination method working? Yes, it is indeed working. B, C and D ruled out. Correct answer क्या होगा? A for Ahmedabad, 1, 2 and 3. Look at the explanation. Himayat Sagar and Osman Sagar are dams constructed over the Mosi River. Again correct. The river flows through Hyderabad city. The city of Hyderabad is situated on the bank of river Mosi. और ये क्या करती है? Divide कर देती है हैदराबाद को in between the old city and the new city. Also remember, Hyderabad जो है, it was a princely state and Hyderabad was occupied by the Indian Army under Operation Polo. तो ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, आर्म फोर्सेस ने, और फिर हैदराबाद को ऑक्यूपाई किया था. रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले कि आगे चलें, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे. तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था. मैंने आपको कई बार बताया कि देखिए होता क्या है कि इस तरह के ऑपरेशन जो है उनकी इंटेंसिटी कम है. यहाँ पे जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो बेसिकली वॉल्यूम है वो कम है, लेकिन लोकेशंस मायने रखती हैं. अंडरस्टूड. तो हिमायत सागर एंड ओस्मान सागर आर दी 2 डैम्स ऑन दी मूसी रिवर. और ये जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? मीर आलम लेक. क्लियर. तो ये रीजन था, इसको हमने पिक किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the question number 10. This is going to be the last question of today's session. So question number 10 is consider the following statements. The first statement says the polar vortex. It is a large area of low pressure and cold air that swirls around both of the Earth's polar regions, Arctic and Antarctic. Absolutely correct. Second statement says when the polar vortex weakens, some of the cold Arctic air can break off and move south, causing extreme winter conditions in the parts of America, Europe and Asia. See what happens. जैसे polar vortex जो है basically क्या है? It is a low pressure and the cold air. Low pressure and the cold air that swirls around both of the Earth's polar region. Now what happens? Polar vortex को आप दो parts में divide कर सकते हो, दो parts में categorize कर सकते हो. First one is the
टोपोस्फेरिक एंड द सेकंड वन इज द स्ट्रेटोस्फेरिक। तो ये लो लेवल एटमॉस्फेयर में है और ये अपर लेवल एटमॉस्फेयर में है, मतलब ये है लाइक 1 to 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और ये है 15 किलोमीटर्स एंड अबव, लगभग 15 to 50 किलोमीटर्स के बीच में, राइट। तो ट्रोपोस्फेरिक बिटवीन 1 to 15 किलोमीटर्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक बिटवीन 15 to 50 किलोमीटर्स, राइट। अब बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो पोलार जेट स्ट्रीम्स हैं, पोलार जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, ये पोलार वॉर्टेक्स को बाइंड करने का काम करती हैं। अब व्हाट हैपेंस कि अगर पोलार जेट स्ट्रीम्स वीक हो जाएं तो क्या होगा कि जो पोलार जेट स्ट्रीम्स ने इसको बाइंड कर रखा है पोलार वॉर्टेक्स को, दैट वुड वीकन एंड इफ इट ब्रेक्स देन इट वुड गो साउथवर्ड्स। तो अब आप ऐसे समझिए कि आर्कटिक रीजन में जो पोलार वॉर्टेक्स है, अगर वो वीक हुआ तो क्या होगा, वो साउथवर्ड्स की तरफ मूव करेगा। बेसिकली पोलार जेट स्ट्रीम्स ने जो बाइंड करके रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो वो बाउंडेशन है वो बाउंडेशन वीक होगा और इसकी वजह से जो जो यहाँ पे जो कोल एयर है वो किस तरफ मूव कर जाएगी, साउथ की तरफ में। अंडरस्टूड। इसकी वजह से यूएस, यूरोप और एशिया, इन तीनों रीजन्स में एक्सट्रीम यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। सो व्हेन द पोलर वोर्टेक्स वीकन्स, some of the cold Arctic air breaks off and moves south, causing extreme winter conditions in part of the America, Europe and Asia. So this is absolutely correct. एंड देखिए पोलार वॉर्टेक्स ये जो है यहां पे आप देख सकते हैं दैट स्टेटमेंट नंबर 2 इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पोलार वॉर्टेक्स। क्लियर। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 जस्टिफाई द स्टेटमेंट नंबर 1। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। क्लियर। और याद रखिएगा विंटर्स में ही ये होता है, राइट। विंटर्स में ही इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को पिक करने के पीछे रीजन क्या है, यू कैन सी हियर। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। The polar vortex, what's behind the lethal winter storms in the United States? अब यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 50। तो यहाँ पे 17 स्टेट्स में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे विटनेस किए गए हैं बिकॉज ऑफ द पोलार वॉर्टेक्स। क्लियर। सो दोस्तों दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशंस बेहद पसंद आ रहे हैं और ये आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल हैं। सेशंस को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और इन सेशंस को अपने दोस्तों तक, अपने कंपेनियंस तक के पहुंचाएं प्लीज। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी रिकमेंडेशन अगर आपकी है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, है ना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा जो है वो टीम का एंथुजियाज्म बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज्यादा बेटर सेशंस लेकर के आ पाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।